category of people है ना, they are people of live to eat and eat to live. ठीक है. कोई लाइफ का विजन ही नहीं है. लेजी पीपल, बस इतना ही है कि आई मीन माई सेल्फ, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, मेरी औलाद बीगन हाउस से पढ़ ले, मेरा घर बन जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, दैट्स इट. इनका ना कोई लाइफ में विजन नहीं है. रॉबिन शर्मा भी कहते हैं कि यू कैन नॉट बिकम लेजेंडरी इफ़ यू हैव नो एनर्जी. आप एनर्जी नहीं है ना जो अल्लाह की तरफ से आती है, आप कभी बड़े काम नहीं कर सकते हो. दूसरी तरह के वो लोग होते हैं यार जो they have a plan, they have some energy, they have a vision, but they are time limiting. If and when इनकी लाइफ में बहुत होता है. If and when I join youth club, if and when I have such amount in my bank गज़ा भेजने के लिए या एक्सक्लूसिव काम करने के लिए, if and when I have a good company, if and when I get million social media followers. यानी मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं कि कब वो मोमेंट आएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा. और ये ब्रो, ये जो निशानी है ना, सक्सेसफुल पीपल सी एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी चैलेंज, बट लूजर्स दे सी अ चैलेंज इन एवरी अपॉर्चुनिटी. तो ये चैलेंजेस देखते हैं और ये टाइम लिमिटिंग और टाइम परमिटिंग होते हैं कि मुझे अगर तालियां बजाएंगे, लोग मिलेंगे तो फिर मैं काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा. तो तीसरे जो लोग होते हैं ना, सुभान अल्लाह, ये ना ब्रो, दे डोंट वेट फॉर द आइडियल सिचुएशंस. सही. They know ideal situations are never there. I have to start right now. मुझे अच्छे दोस्त कभी नहीं मिल सकते, मतलब वो नहीं मिल सकते आइडियल. मेरे पास आइडियल हेल्थ कभी नहीं हो सकती. जिस तरह से मैं हूँ ना, मुझे काम शुरू करना है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से. और असल में ब्रो जो तीसरी कैटेगरी है ये कामयाब है. इन दो जो कैटेगरी जो नहीं कर पाते ब्रो, इसका असल जो कोर है ना ब्रो, कोर, दे हैव दिस सेंस ऑफ वर्थलेसनेस इन देम कि रब ने मुझे इस काबिल नहीं किया कि मैं अच्छा काम कर सकूं लाइफ में. अच्छा, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है देन अगेन वो शैतान का है, जो आपको डिप्रेस करता है और आपकी जो है ना लेग पुलिंग करता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन डू नथिंग, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो चुकी है. यार वैसे एक डिफरेंस स्ट्राइक करें जरा बिटवीन वर्थलेसनेस एंड ह्यूमिलिटी. ब्रो ह्यूमिलिटी समटाइम्स दे कैन गेट मिक्स्ड अप, यू नो. यस ब्रो, और ये बड़ा फाइन लाइन है ब्रो इसके बीच में कि यू प्लान बिग थिंग्स, यू प्लान बिग स्टफ, you try to help the deen of Allah, you speak haq wherever it is. Bro, worthlessness पता क्या है मैं आपको बताऊं, खानदान वालों के सामने अगर गुनाह हो रहा है ना, वो ना बोल पाना. अच्छा ठीक. अल्लाह के अलावा लोगों से खौफ फील करना, ब्रो ये वर्थलेसनेस है इंसान. अच्छा, ह्यूमिलिटी इसको आप ऐसे जो है डिफाइन कर सकते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी, आपने अचीव बहुत किया है बट यू आर नॉट बोस्टिंग अबाउट इट. और अगर आपने जो भी काम किया है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया है ना, तो कल को अगर आप इस दुनिया में नहीं भी हो, आपके चर्चे होंगे इंशाल्लाह, मीनिंग दिस वाज द राइट पर्सन. और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस दुनिया में चर्चे ना हो, जिस ज़ात के लिए आपने काम किया है और अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, तो वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निजात तो हो ही गई है. और ह्यूमिलिटी में ब्रो ये भी है ना कि फॉर एग्जांपल यू सुब्हानअल्लाह डू एवरी खैर इन द वर्ल्ड बट एट्रीब्यूट इट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नॉट जस्ट वर्बली बट यू नो इट बाय योरसेल्फ कि वल्लाही आई एम नथिंग. लेकिन यही चीज़ कभी कभी आपको फिर वर्थलेसनेस वाली ओवरवेलमिंग नहीं हो सकता, यू नो. हो तो शैतान कैन मेक यू फील दैट यू आर अ नोबॉडी बेसिकली, यू नो. आपने वाकई कुछ नहीं किया, हाँ, और आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में. ये तो मैं समझता हूँ सुअज़न बिल्लाह है जो शैतान दिलाता है कि अल्लाह ताला हैज़न्ट गिवन यू कैपेबिलिटीज़ और टैलेंट्स टू अचीव अल फिरदौस. हाँ, इफ़ यू शायद तुम नीचे कहीं पहुँच जा सको या शायद जहन्नम से बच जाओ, बट टू अचीव अल फिरदौस अल आला नहीं, तुम्हारे दिस इज सुअज़न बिल्लाह. अच्छा, इसमें इल्म की भी कमी है क्योंकि मोमिन का मामला यही है बैनुल खौफ व रजा. उसके अंदर खौफ भी होता है अल्लाह ताला का, वर्थलेसनेस का कि पता नहीं मेरे ये जो हसनात हैं, नेकियां कबूल हो रही हैं कि नहीं हो रही, कहीं अल्लाह ताला मुझे पकड़ ना ले. लेकिन उसको खौफ डिप्रेस नहीं कर देता. इसके साथ साथ उसको होप भी है, इंशाल्लाह एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना. मैं अगर गुनाह हो भी जाते हैं, ठीक है, आई स्टैंड अप अगेन और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ. अब ये जो है मामला है मोमिन का कि वो जो है ना दोनों जो है ना सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस, क्योंकि शैतान तो वहीं स्ट्राइक करता है ना जहाँ उस बंदे की वीकनेस होती है. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर एक बंदा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा जन रखता है ना अपने बारे में, अपने और अल्लाह के मामले के हवाले से, तो शैतान उसमें उसको बढ़ाता है कि तू तो बहुत ज़्यादा नेक काम करता है. लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक ऐसा शख्स है ना जो कि बहुत हम्बल है, ठीक है, और उसको अपनी मिस्टेक्स का पता है, तो शैतान उसको इस चीज़ में भी बढ़ाता है कि तू तो फारिग है,
ٹھیک ہے, تیرے سے تو گناہ ہو جاتے ہیں اور تیرے سے اچھے کام نہیں ہو سکتے, حالانکہ تو جانتا بھی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا اس کو کیسے شیطان, دس از ہاؤ شیطان پلیز. بیلنس اس کو اسٹرائک کریں. ابھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی نا, سبحان اللہ, خلیل ہیں, خلیل الرحمن ہیں. سورہ بقرہ میں آخری جز کے جو ہے آخری 1-2 پیجز میں وہیب ابن ورد رحمہ اللہ وہ نا آیت کی تفسیر کرتے ہیں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہیب بن ورد جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. He started crying. تو لوگوں نے جب پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں, کہتے ہیں کہ کیوں نہ رویا جائے اس آیت پہ, خلیل الرحمن یبنی بیت الرحمن بإذن الرحمن ویخاف اللہ یقبل, کہ ابراہیم کون ہے, خلیل الرحمن ہیں, اور رحمان نے ہی حکم دیا ہے میرا گھر تعمیر کرو, اور وہ تعمیر کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اور اینڈ میں وہ کیا کہتے ہیں, وَيَخَافَ أَلَّا يُقْبَلْ, کہ ان کو خوف لگا ہوا شاید یہ قبول نہ ہو میری طرف سے, اسی لیے انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہ تو ایک خوف والی کیفیت ہے. دوسری جگہ میں اگر آپ کی خالص نیت ہے, آپ امیجن کریں کہ ایک زانیہ عورت نے پیاسے کتے کو, انسان کو بھی نہیں پانی پلایا, اور پانی پلایا یہ نہیں کہ خرید کے پلایا, پانی پلا دیا, نیت خالص تھی جنت میں. اور ایک اور یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ ایک بندے نے راستے سے نقصان پہنچانے والی چیز پتھر کو سائڈ پہ کر دیا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈالا. بالکل. سو دس از دا پرفیکٹ بیلنس. ہمیں دونوں سائڈز ملتی ہیں یعنی اسلام میں, کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور یہ بھی ایک سمٹم ہو سکتا ہے کہ اف یو whenever you are criticized you feel offended. یہ خود پسندی کا ایک وہ ہے, you don't like criticism at all. آپ کو فلاں فلاں کی بات کر جائے مسئلہ نہیں ہے, جب مجھے اصلاح کی جائے میری, تو میں ہر ٹائم کہوں کہ صحیح طریقے سے اصلاح نہیں کی گئی, یا لوگوں کے سامنے اصلاح کر دی, اور ہر ٹائم نا اس کو وہ کرنا. اور یعنی میں دین کے بارے میں اتنی غیرت نہ فیل کروں, بلکہ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں مجھے زیادہ ہو کہ میری پرسنالٹی پہ آواز نہ آئے. حالانکہ اللہ کے نبی کا اپوزٹ معاملہ تھا, آپ کو جو مرضی کہہ دیا آپ نے کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا. یعنی وہ نہیں کہا کہ ڈیفینڈ تو صحابہ نے کیا آپ وسلم کو, اور اپنے بارے میں آپ نے کہا کہ میں حق ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ہوں, لیکن افینڈ نہیں ہوئے دین کے بارے میں. تو جو ہمبل انسان ہے نا, وہ اپنی کرٹیسزم کو لے لیتا ہے,